Hello and welcome. You're watching Wealth Creators on Money9, India's first multilingual platform for personal finance from TV9 News Network. I'm Sakshi Batra, and on this show, we talk about those stocks that have given robust returns to investors' portfolios in the past, and also share an outlook with you on these particular stocks so that you can keep them on your radar for your investment portfolio as well. Joining in on this show is my colleague first, Rahul Oberoi, and we're all working from home. Rahul, thank you for joining in. Good morning. And we're going to be talking about thematic stocks today in Wealth Creators Edition. We're going to be talking about one theme that is consistently on, and that is the COVID-19 second wave. And because of the second wave, the kind of impact that we are seeing on the oxygen producing companies, these stocks have had such a sharp run up in the recent few trading sessions that we really needed to talk about these stocks as well. So Rahul has brought up a full research on which are these stocks that which are these companies that produce oxygen, how have they performed in the markets in the past few days, and what is it that you should be really doing. Thank you very much, Rahul. So सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन रिलेटेड थीम है, ये कोविड-19 पैंडेमिक की सेकंड वेव में ये कैसे चल रही है? हाय साक्षी, गुड मॉर्निंग। सो अभी जैसे हमने देखा कि कल जो है हमारे फ्रेश केसेस कोविड के 3 लाख क्रॉस कर गए थे, तो इसी की वजह से जो हमारी डिमांड सप्लाई भी है वो काफी मिसमैच हो गई है ऑक्सीजन के अंदर। जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन स्टॉक्स है वो काफी मोमेंटम में आ गए हैं। राइट, सो दी ऑक्सीजन स्टॉक्स आर इन मोमेंटम। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, और ओवरऑल अगर देखा जाए पैंडेमिक में कहाँ कहाँ ऐसे ज्यादा जो कंपनीज हैं मोमेंटम कहाँ पर देखने को मिला है, खासतौर पर अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स से भी कंपेयर करेंगे तो किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिले हैं? तो रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल में या ईयर टू डेट की बात करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न दिए ऑक्सीजन कंपनीज ने। अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिंड इंडिया की, तो इन्होंने जो है स्टॉक्स ने ईयर टू डेट 92% का जो है रिटर्न रहा है, और अप्रैल में मोर देन नियरली 4% का रिटर्न रहा है। और बाकी जो अदर मेजर कंपनीज है जैसे नेशनल ऑक्सीजन है, भगवती ऑक्सीजन है, इन्होंने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को अप्रैल के महीने में। और अगर हम बात करते हैं खाली ऑक्सीजन ही नहीं, जो ऑक्सीजन से रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि सिलेंडर्स बनाती है कंपनी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर है, उसने पैसा जो है दुगना कर दिया, मोर देन 130% का रिटर्न दिया इस साल, और मोर देन 55% इन अप्रैल ओनली। और एक ट्रेंड और भी निकल के आया इसके अंदर। अगर किसी कंपनी में अगर सपोज ऑक्सीजन का नेम है, जैसे बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, उसका स्टॉक 10,000 से 25,000 पहुंच गया, बट वो ऑक्सीजन में कोई डील नहीं करती है। तो जो मोमेंटम है काफी हाई है जो ऑक्सीजन वर्ड है उसको लेकर। इनफैक्ट जो एक गगन गैसेस कंपनी है जो इंडस्ट्रियल गैस बनाती है, उसका ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो स्टॉक जो काफी बज़ कर रहा है। तो पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन थीम है काफी इस समय प्ले कर रहा है इस समय मार्केट में। एब्सोल्युटली। तो काफी ऐसे स्टॉक्स आपको अपने स्क्रीन पर दिखे जहां पर जोरदार तेजी हमने ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में भी देखा है। अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे तो जहां ईयर टू डेट में सेंसेक्स अब नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने आपको 20% से लेकर 60% और 125% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। इनके नाम नेशनल गैस या फिर एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, भगवती गैसेस, इन सभी स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लिंड इंडिया जैसे स्टॉक आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखे। और साथ ही साथ राहुल ने ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड बताया है कि जहां ऑक्सीजन का नाम था वहां इन्वेस्टर्स ने कंफ्यूजन के चक्कर में उन स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि ये कंपनियां ऑक्सीजन बनाती हैं, जैसे कि बॉम्बे ऑक्सीजन, जहां पर सडनली हमने 200 से 250% तक का भी अप मूव देखा था। तो राहुल, इसके अलावा भी कुछ और नाम थे, जैसे कि शायद आइनॉक्स विंड में भी हमने कल के सेशन में देख लिया था कि शायद 20% तक के आसपास की तेजी थी। ऐसे कौन कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर कंफ्यूजन के लिहाज से हमने देखा है कि स्टॉक्स में खरीदारी हो गई? लेटेस्ट जो अभी आपने नाम लिया आइनॉक्स विंड, इनकी ग्रुप कंपनी है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। वो काफी लीडिंग गैस मेकिंग कंपनी है कंट्री की, तो उसकी वजह से जो ग्रुप कंपनीज है उनमें थोड़ी बैंक देखने को मिली। जैसे कल हमने देखा था कि आइनॉक्स विंड में 20% का अपर सर्किट हिट कर गया था।
एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक जगह कंफ्यूजन के लिहाज से भी खरीदारी ज्यादा हो रही है, और कुछ कंपनियां जो कि एक्चुअल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं उनमें तो अच्छी तेजी देखने को मिली रही है। हाल में आपको ये भी बता दें कि 18 अप्रैल को यहां पर सेंटर ने बैन भी कर दिया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल हो सके। तो इस लिहाज से भी आप देख रहे हैं कि डिमांड जो है ऑक्सीजन की काफी बढ़ रही है। इसका पूरा लेखा जोखा भी यहाँ पर राहुल ने क्रिएट किया है। तो राहुल, ये बताइए कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक दोनों में किस तरीके की ऑक्सीजन की डिमांड थी, क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है अपने रिसर्च में? तो साक्षी, जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो मोर देन 7 टाइम्स बढ़ गई है प्री कोविड टाइम में और अभी तक में। तो अगर बात करते हैं प्री कोविड की, तब जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड थी वो थी 700 टन पर डे की, जो कि फर्स्ट वेव में पहुंच गई थी 2800, मतलब 4 टाइम्स हो गई थी। और जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है अराउंड 5000 टन पर डे ऑक्सीजन की डिमांड है। तो इसी की वजह से हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल यूज पे बैन लगा दिया है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो प्राइसेस हैं वो भी हमें ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए हैं इस सिनारियो में, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये फिगर्स देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में किस तरीके की डिमांड में जंप आया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। जहां एक तरफ प्री पैंडेमिक ऑलमोस्ट 700 टन पर डे के हिसाब से कंजम्पशन थी इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, आज वो 5000 टन पर डे के हिसाब से ली जा रही है। तो आप इसका ये गैप से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक्सपोनेंशियल राइज इस डिमांड में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, और इस पूरी थीम को रिसर्च करने के लिए और ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बताने के लिए जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में जुड़ने के लिए। साथ ही अब आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं इस पूरे ही ऑक्सीजन थीम को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान क्रांति बतीनी वेल्थ मिल सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच क्रांति फॉर joining in for on this special show where we have done this research on the oxygen theme of the stocks that is currently in momentum. What is your take currently on this running theme right now? Sakshi, I totally agree with your words. The stocks are in a complete momentum zone. I believe this momentum going to continue till the time the demand is there for the medical oxygens are concerned. But just to give a brief elaboration with respect to oxygen as a requirement is concerned, see, as you mentioned, certain stocks which are producing oxygen in India, these stocks are related to specific to oxygen. But Yeah, oxygen, if you see, can be used across the spectrum of industry. For sure. example, if we observe the steel companies they produce internally for their requirement of industrial requirement for their production in steel mills like Tata Steel, and every company produces Tata Steel for their internal requirement. And also Reliance Industries, as the news has been coming in the media and all, okay, they also produce for their internal requirement oxygen. Even companies like which are petroleum oil marketing companies like oil refineries like Indian Oil Corporation also produces industrial oxygen. But these oxygen also can be used for the medical purpose. Right. So currently, this complete oxygen theme is in a demanding zone, as we are witnessing daily. The number of COVID positive cases are going up, and how much percentage of these COVID positive cases they need actually the uh, oxygen requirement for their Sure. treatment. Of Sure. course, there is a big demand. The stock are in a complete momentous zone, but investors need to treat these stocks as a momentum stocks, exercise due diligence before buying the levels in these stocks. Of course, Yeah. Everest Conta has run up a lot. The stock has rallied from past because of the fundamental reasons. The stock reduces their debt, and the stock is nearly up by 10, 12 times. How long this demand will last? Okay, Yeah. probably COVID second wave might persist for a couple of months. Yeah. We are not the virologist to say when this Sure. second wave. But as long as the numbers keeps on going up, the demand for this medical oxygen remains high.
Sure. So would you actually suggest investors who are looking for momentum plays and such stocks so that they can, on a short term, get these gains till the time this momentum or this theme is building up? Any of the stocks that we have seen so far, any of them on your radar also based on fundamentals or anywhere, what would your suggestion be to investors? How should they look at these stocks like National Oxygen, Bhagwati Oxygen, Everest Kanto, Lind India? Linda India offers a whole lot of space to the investors. The stock has doubled, in fact. Any dip in these stocks, okay, for example, the Linda India or else Everest Canto, because the business models are more diversified models. Because the pure oxygen plays, how many days the earning sustainability loss is a bigger question. Once Yeah. the COVID wave get over, these stocks will go to back burner again, and the investors will find difficulty to exit these stocks also, because these Hmm. are in a momentum zone. So Sure. my suggestion to the investors is, I educate investors to go for the diversified models where there is no dependency is not purely on medical oxygen, but also others. Linda India offers the pure diversification. They have the industrial gases. As the economy is taking a positive turn, there will be a Yeah. industrial activity is going up. So there is a demand for gases, industrial gases will go up. So Linda India offers a diversified business model. At the same point of time, Everest Control also, they produce cylinders, CNG cylinders. As it is the automobile space they are into. So it gives a diversified model than going with a pure just for a couple of weeks or couple of months momentous model. Sure. Understood. So all the investors who are looking to play this theme must remember that those companies which are well diversified with respect to their producing of oxygen, which don't only produce for medical purposes, but also for varied industrial uses, because some or the other time, the other theme will start taking on. So in case you're looking for adding some of these names into your portfolio, look at that diversification in the company's profile and then look at adding them to your portfolio as well. One last question to you, Kranthi. I wanted to understand from you that because of the because of the kind of diversion that we are seeing from these companies, like you took the name of Tata Steel, we've come to know about Reliance Industries and Vedanta both, that for now, because of this kind of emergency that we are seeing, they're diverting their oxygen for medical purposes. Any kind of hit do you expect because of their, diverting this kind of oxygen on their businesses? And how should investors really look at these companies if they are already in their portfolios? Uh, Sakshi, it is completely premature to say if there any hit on their production. It is Yeah. completely premature. Normally, industries they keep excessive storage of the gases and their Okay. requirement as per the capacity additions. But it Sure. is completely premature to say that they are diverting their production requirements into medical uses. Of course, we need to say the lives are very important than the profits. So Sure. we need to give utmost importance to lives, but it is completely premature to say at this moment that there might be any impact on their production at present. Okay, sure. Understood. Thank you very much, Mr. Bathini, for sharing with us your view on the oxygen theme and these momentum stocks, and how should investors really approach this entire theme of oxygen producing companies and the stocks that are touching roof highs at this moment as well. Thank you very much for joining us. And with that, we wrap up this edition of Wealth Creators. Hope you've got a complete understanding of how to really approach this momentum theme that is going on with respect to oxygen producing companies and the stocks that are touching their all-time highs and lifetime highs. So how do you approach that with respect to your investment portfolio? I hope that you've got all the perspective with respect to research and also expert take as well. And with that, we wrap up this edition. Many thanks for joining in.